See, in the resource is again a very vital topic in geography. So first understand the structure. When I'm talking about resources, I'm talking about resources of India. So in paper 1 and paper 2, in both the paper you have to cover this topic. But in paper 1, section B, you have to learn about world resources. Through mapping, I will cover the world resources. But here, right now, I am going to cover resources of India. But during this discussion, I would like to give you a concept of what is resources. Then what is resource process? We have to understand what is the significance of resources. And then classification you have to understand. Now, once we try to understand the classification, there are various bases to classify the resources. So, as I have said, there are various bases. To classify the resources. Good morning. Good morning. Classify the resources. So, I will discuss what are the bases on which we classify the resources. Now, once you go through the syllabus, then what we observe here in the syllabus, specifically in your syllabus, we have to learn about a different kind of resources. We have to learn about the status of water resources in India, and it is a complete, a full topic. It is having great potential to be asked in mains as well as in pre. So there are various factual questions asked in pre, and it may be asked in a mains as a full question: water resources in India. So we have to cover these resources in holistic manner. Every amplitude, every dimensions of the water resources we have to cover. Then
We have to learn here the mineral resources. Now, there are different type of minerals which is present in India. So we have to cover all the important metallic minerals, non-metallic minerals. This topic is again very vital for pre as well as mains. Now, when we talk about the resources, we have to learn the energy resources, renewable source of energy, non-renewable source of energy. We have to, out of which I had covered in oceanography the tidal energy, the otic energy. Here, what you have to learn is the wind energy, solar energy, thermal energy. Okay, so some renewable and non-renewable sources we have to cover. So individually, you have to cover the different dimensions of the resources. And now, say for example, when we are covering the metallic resources, out of which iron, iron itself a full question, coal itself is a full question, aluminium itself is a full question, copper itself is a full question, lead itself is a full question. उसमें खुद पोटेंशियल है, अगर एग्जामिनर चाहा तो उससे भी वो पूरा एक फुल क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन बना सकता है. उसके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, उसके एप्लीकेशन के ऊपर, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट के ऊपर, पोटेंशियल के ऊपर. तो अगर हम इसको देखेंगे, बट दिस टॉपिक इज क्वाइट फैक्चुअल. देयर आर सर्टेन conceptual part, but largely you have to memorize the facts also. When you are learning distribution, of course, I had already discussed the rocks of India, geological structure of India I had covered. So the student having the idea of rocks and geological structure, उसको कुछ आइडिया मिलता है कि कौन से मिनरल किस एरिया में मिलेंगे. तो दैट इज अ कॉन्सेप्ट. अब किसी का कॉन्सेप्ट वीक है, वो रॉक की अंडरस्टैंडिंग डेवलप ही नहीं कर पाया, वो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इंडिया का पढ़ा नहीं, समझा नहीं, रिवाइज नहीं किया, तो प्रॉब्लम है कि उसे मिनरल्स याद करना पड़ेगा कि किस स्टेट में है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो फैक्ट क्रैम करेगा. तो क्या है कि एवरी व्हेन यू रीड द टॉपिक्स having conceptual parts as well as the factual parts, facts is essential to build the concept. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको वर्क करना पड़ता है, समझना पड़ता है. तो यहाँ पर ये जितने भी हैं इनमें खुद ही पोटेंशियल है फुल क्वेश्चन का, और अगर हम इसे डिवाइड करें, इसको ब्रेक करें, तो इसमें कई फुल क्वेश्चंस बनेंगे. इसको डिवाइड करें तो इसमें कई फुल क्वेश्चन बनेंगे. सोलर एनर्जी में भी अ फुल क्वेश्चन, wind energy may be a full question, thermal energy may be a full question, hydro energy may be a full question. उसके खुद पोटेंशियल है फुल क्वेश्चंस. In science and technology I had covered nuclear, in oceanography I had covered tidal and otic energy. तो उसको यहाँ छोड़ दिया जाएगा, तो फिर भी
क्या करना है, स्टूडेंट्स हैज टू create a concepts when he is learning the resources in India, तो उसके माइंड में सारे रिसोर्सेज एक जगह माइंड में हो क्लियरिटी के साथ जब वो रिवाइज कर रहा हो। एग्जाम अल्टीमेटली किसको लिखना है, स्टूडेंट्स। लिंकेजेस किसको डेवलप करने हैं, स्टूडेंट्स को। तरीका बताया जाता है पढ़ने का। तो मैंने क्या बताया, ये खुद में एक फुल क्वेश्चन है। तो ये जो कवरेज है, मैंने ये टॉपिक्स बताए, अभी इसके अंदर सब टॉपिक्स डिवाइड करेंगे तो कई सारे निकल कर आ जाएंगे। ठीक है। नाउ when you talk about the resources in India, we have to understand the challenges also. As you know, the resources is not ubiquitous. पूरे वर्ल्ड में रिसोर्सेज हर जगह एक समान नहीं है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो कुछ रिसोर्सेज इंडिया में अवेलेबल है, कुछ नहीं है, और जो नहीं है वो इंपोर्ट करने पड़ते हैं। जब इंपोर्ट करते हो तो चैलेंजेस क्रिएट होते हैं। तो उन कॉन्स्ट्रेंट्स के ऊपर, उन चैलेंजेस के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अभी पेट्रोलियम को लेकर चैलेंजेस है। पेट्रोलियम रिसोर्सेज, एज यू नो, इज वेरी लिमिटेड इन इंडिया, so largely we import, and because of the geopolitical scenario, the global geopolitical scenario right now, what is happening, petroleum prices is increasing, domestic cylinders prices is increasing, commercial cylinders, LPG cylinders prices has increased over period of time. Why such things happen? So sometimes in examinations, the examiner also raise contemporary issues. They link that contemporary issues. In this digital era, there is a huge demand of semiconductors, rare earth elements, and few countries in the world having these resources. Now, limited distribution of these resources again poses challenges. So, if we have to understand the broader perspective, then we have to learn the contemporary scenario also. We have to cover the current affairs, we have to learn the newspaper, we have to cover the magazines. So here the static part I will cover. I will cover certain contemporary issues which is right now, which is going on. But as you people know, you are not going to write the examinations right now because you are not well prepared. So this is the structure. And the way we had to cover this topic. Now let's start with the resource. Now what is the resources? And why we are learning here the resources, why it is important? With reference to India, I'm not going to discuss the global resources, but yes, of course, in introduction, I'm going to discuss about the basic concept of resources first. What is resources? The elements which is present in the earth and earth's environment, which are useful or beneficial for the mankind.
If anything which is not useful, not beneficial, the human doesn't have idea how to use. If available is not resources. So resources is what? Which can be utilized. If the human understand the utility and the way it may be used, then that element, that compound, that matter become the resources. So now the question is whether it is depend on the utility and utilizations of that element or the matters or compound. Yes, of course. There are bounty of matters. There are lots of huge amount of matters present in the earth and earth's environment. But the humans don't have idea how to extract it, how to utilize that. There are so many things which is present within the earth and in our surrounding, in the earth's environment, but the human having their own limitations, the human having their own capacity. तो जिन चीजों के बारे में वो जानता ही नहीं है, वो रिसोर्स नहीं है. So resource change over the period of time. So what we find with the time, when you look at the temporal concepts, with the time the resources change. आज जो चीजें यूज कर रहे हो सकता है फ्यूचर में उसकी यूटिलिटी ना हो सकता है नई चीजों की डिमांड हो जाए, नए रिसोर्सेस आते हैं. रिसोर्स चेंजेस विथ द स्पेस. अलग अलग जगहों पर जाओगे, वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन में जाओगे, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग लोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं. मे बी द पीपल ऑफ one nation, what they utilizes is not utilized by the people of another nation. तो जो दूसरे देश में यूटिलाइज नहीं हो रहा है वो वहां रिसोर्स है ही नहीं. Okay. So what we observe, temporal and spatial variation in resources. Resources, क्या कल्चर भी इन्फ्लुएंस करता है रिसोर्सेज को? यस, ऑफ कोर्स. Some people culturally and religiously are vegetarians. They won't have non-veg. उसके लिए वो रिसोर्स नहीं. अब नॉन वेजिटेरियन भी है तो उसमें कई लोग पोर्क नहीं खाते, बीफ नहीं खाते, तो वो उनके लिए रिसोर्स नहीं. So resource, what I had discussed here, the resource change over period of time, the resource change with places. The resource also depend on the culture and religion, custom and traditions. So resource, when you look at, is not a static concept, it is a dynamic concept. It's a very dynamic concept. So here what I have written here, what is resource? All those elements of the earth which are useful or necessary to man can be considered as resource. Useful and necessary. Now another term you have to understand is the resource process. What is resource process? If anything available in the nature and the human doesn't have idea how to use that, that is not resource, as I have said.
So the people started learning how to use. They started extracting, processing, utilizing, and ultimately after utilizing that resource become the wastage. रिसोर्स एक्सट्रैक्शन किया, यूज किया, उसके बाद क्या कन्वर्ट कर लिया, वेस्टेज. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू मैनेज द वेस्ट. टुडे देयर इज अ ग्लोबल इश्यूज हाउ टू मैनेज द वेस्ट. वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करेंगे, वेस्ट कैसे क्रिएट होते हैं आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. सो व्हाट इज द रिसोर्स प्रोसेस. ये ह्यूमन जो एक्सट्रैक्शन करता है, उसकी प्रोसेसिंग करता है, उसका यूटिलाइजेशन करता है, अल्टीमेटली वो वेस्ट में कन्वर्ट होता है, इसी को कहते हैं रिसोर्स प्रोसेस. सो रिसोर्स प्रोसेस takes place when they are extracted and used by the man and returned as wastage. So when you are learning the resource, you also must learn the resource process. And once you are learning the resource process, the major challenges today is if you started utilizing, as the population is increasing, the demand of resources is increasing. And if the demand of resources is increasing, we started extracting more and more resources from the nature. And when we started extracting more and more resources and started utilizing that, we are creating more and more wastage. And once we are creating more and more wastage, then there is a need of more and more waste management. Otherwise, we are polluting our environment. And there is a repercussion of that wastage. तो अब उसका भी मैनेजमेंट एक इश्यूज होते हैं. So now the question is not only on the resources but also on the resource process, waste management. अब न्यूक्लियर पढ़ रहे हो तो न्यूक्लियर वेस्टेज के मैनेजमेंट पर भी क्वेश्चन आता है. मैंने डिस्कस किया था कि क्या चैलेंजेस, क्या थ्रेट है. कोल पढ़ रहे हो तो कोल बर्निंग से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज हो रहे हैं, एसेस डेवलप हो रहे हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, वो एयर पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल करेंगे, वो एसेस जो है उसका कंट्रोल कैसे करेंगे. सो इफ यू आर लर्निंग एनी रिसोर्सेज, ओके, द रिसोर्स प्रोसेस इज देयर, वेस्ट मैनेजमेंट इज देयर, वो वहां पे इंटरलिंक्ड कॉन्सेप्ट्स. सो दिस रिसोर्स प्रोसेस इज बेसिक एंड सेंट्रल थीम इन ज्योग्राफी. ये रिसोर्स प्रोसेस सेंट्रल थीम है. क्यों? उसके पीछे तीन कारण है. वन इज इकोलॉजिकल सिस्टम, अनदर इज स्पेशियल, और इन दोनों को मिला लोगे तो देयर इज अ एंथ्रोपोजेनिक सिस्टम. वन इज इकोलॉजिकल, अनदर इज स्पेशियल, एंड इफ यू combined this, it comes under anthropogenic activities. So what is the ecological system? What is ecology? I had discussed that ecology derived from the two words oikos and logos. Oikos means habitat. The study of habitat is called ecology. So here what I had mentioned, the extraction, use and disposal. Extraction of resources, use of resources and disposable of resources constitute major component of ecological system. इकोलॉजिकल सिस्टम का कंपोनेंट क्या है? तो आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, कहां से करते हैं? अर्थ और अर्थ से, एनवायरमेंट से करते हैं. फिर आप यूज करते हो, फिर डिस्पोज करते हो रिसोर्सेस. दिस इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम, okay, in which man interacts with the physical environment. So here the man interact with the physical environment. Physical environment.
And from this physical environment, the man extracted the resources, use it, dispose it. This is called ecological system. लैंड वाटर एयर, यहीं से मिनरल्स ले रहा है, यहीं से रिसोर्स ले रहा है, वट एवर द नॉट ओनली मिनरल्स अदर एलिमेंट कंपाउंड, दैट इज फिजिकल एनवायरमेंट. So in ecological system, what we find, a man physical environment relationship. Man is what the man is doing, man is extracting the resource from there, he started utilizing it and then dispose it. The wastage also created in the process. So the man's alter the physical environment, अभी anthropogenic activity का हिस्सा बनेगा वो. Now when we talk about the spatial system, since resources are not evenly distributed, as I have said, ubiquitous नहीं है, हर जगह एक बराबर एक समान नहीं है रिसोर्स. Okay, the earth's surface, their movement constitute a major component of the spatial system in which man interact with the man. Okay, so as I have said, the resources is not ubiquitous, not evenly distributed. So there is a need of movement of resources. रिसोर्स का मूवमेंट होगा, जहां नहीं है, जहां अवेलेबल है वहां से लोग मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं. तो यहां पर क्या है, मैन इज टू मैन इंटरैक्शन. द पीपल ऑफ टू नेशंस स्टार्टेड इंटरैक्टिंग at the government level, at the individual level, and they are started importing the resources. Why? Because of a spatial nature. Why? Because the resources is not available everywhere in equal amount. तो हम क्या देखते हैं, स्पैशियल कॉन्सेप्ट है यहाँ, डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है. अब उसके कारण क्या है, जहां लैक ऑफ रिसोर्सेज है और जहां अवेलेबल है इन ह्यूज अमाउंट, तो वहां से लोग मंगा रहे हैं. तो यहाँ पर ह्यूमन ह्यूमन इंटरैक्शन हो रहा है. व्हाई? बिकॉज ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. इट इज कॉल्ड स्पैशियल सिस्टम. स्पैशियल, लोकेशन, space. And the most important, the resource process draws both these systems together into single system, the human or anthropogenic activity over the earth's surface. So both this system comes under the anthropogenic activity. मैन ही एक जगह से दूसरी जगह इंपोर्ट कर रहा है अपने नीड्स के लिए रिसोर्स को. स्पैशियल सिस्टम, the man is interacting with the man. Why? Because there is a need of resource and resource is unevenly distributed. दूसरा मैंने क्या कहा कि the man is extracting and utilizing and disposing the resources, ecological system. So both the system is run by whom? Both the system is a part of the component of anthropogenic activity, man's activity. So both the spatial and ecological system is subset of anthropogenic activity, man's activity, human's activity. ये इसी का subset है. So here what I had discussed, there are three concepts I had discussed, the three system, and this system having interlinkages. The system is ecological system under the resource process.
So under the resource process, what I have discussed, there are three systems. One is ecological, another is spatial, and both ecological and spatial systems are come under a umbrella system which we called anthropogenic system. Is a part of that. Okay. Now, when you look at, if you wanted to properly utilize the resources and wanted to develop sustainably, as you know, in the physical environment, the resources are limited. Yes, of course, the man with their human endeavor, their scientific knowledge and tempers, with the which time the man spend money over the research and developments, develop the new technology over period of time, and understand the utilizations, extractions, and disposable of the new resources. तो समय के साथ मैंने कहा कि जैसे जैसे स्टडी बढ़ती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एनवायरमेंट क्रिएट होता है, जो नए जनरेशन है वो नई टेक्नोलॉजी को लर्न करते हैं, तो नए रिसोर्सेस के बारे में भी आइडिया लगता है कि अच्छा इसका भी इस्तेमाल हो सकता है. Recently we have heard that India has launched or inaugurated the first hydrogen based rail. The India has launched. अब वो ट्रेन चलेगी हाइड्रोजन से. They utilizes the water, extract the hydrogen, and the train is run by the hydrogen energy. So the source of energy is hydrogen. Now it's a landmark achievement. Now the people understand the utility of hydrogen being an energy source. और इसके पहले भारत में कोई ऐसी ट्रेन नहीं चली थी, वो पहली ट्रेन चली. तो वो एक लैंडमार्क है. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर रिसर्चर रिसर्च किए, बहुत टाइम स्पेंड किया, कंट्रोल्ड रिएक्शंस कराए, उस पर बेस्ड आज इंजन डेवलप किया और हमने फर्स्ट ट्रेन को लॉन्च किया. तो टाइम के साथ ह्यूमन इज कॉन्टिन्यूअसली वर्किंग over new technology, learning the new methods, using their scientific tempo, and understand what about utility of the new things, and that things become a new resource for the human. तो समय के साथ क्या है, रिसोर्सेस चेंज भी होते हैं, मैंने कहा. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट इज रिक्वायर्ड, और मैंने जैसा कहा कि रिसोर्सेज यूज करना ही नहीं, रिसोर्स के यूज के बाद वेस्टेज होते हैं, वेस्ट डिस्पोजेबल. वेस्ट डिस्पोजल कैसे करना है, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, अदरवाइज दैट क्रिएट पॉल्यूशन, environmental degradation, environmental damage. It may create disaster, it may create epidemics, pandemics, so many diseases, catastrophe. तो ऐसा नहीं है कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन से चैलेंजेस पोजेस थ्रेट्स, इट आल्सो पोजेस थ्रेट्स. सो व्हाट इज रिक्वायर्ड, management of resources required, planning of resources required. So resource management and resource planning is maybe a question. If you look at the previous year questions, then what you get? You get the question from resource planning, resource management. So what I had mentioned here, to ensure the best use of resources and to avoid disastrous interference in natural ecosystem, there is pressing need for ecosystem management and planning. So there is a need of ecosystem management and planning. Okay. By establishment of a control system in which feedbacks can be manipulated to promote beneficial change
and to restrict adverse ones. So the human is not only learning about extracting the resource, use of resource, but human is also learning how to dispose the resource, how to manage the resource, how to reduce the pollution which created by, how to manage the wastage. Human is parallelly learning it, developing new technologies, create a robust planning. अदरवाइज फिर एक पैरेलल प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है. Now, the meaning of resources, particularly in relation to those elements which are useful rather than necessary to man. Try to understand what are resources which is utilized by man, useful for man, and man understand how to use that. Then that become the resources. What is essential for man is not a resource. एसेंशियल बहुत सारी चीजें हैं पर आपको पता ही नहीं है. तो जब पता नहीं है तो डेट इज नॉट अ रिसोर्स. सो हियर व्हाट आई हैड मेंशन कि द मीनिंग ऑफ रिसोर्स particularly in relation to those elements which are useful rather than necessary to man. क्या आपके लिए यूजफुल है, दैट इज रिसोर्स. एसेंशियल है, नेसेसरी है, पर है ही नहीं, आपको पता ही नहीं है यूज कैसे करना है, तो फिर वो रिसोर्स नहीं है. जब तक सोलर पैनल नहीं था, बैटरीज नहीं थे, लोग सोलर एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करते थे, तो सन तो ठीक है. मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स, हाइपोथेसिस, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस और बिग बैंग 13.6 बिलियन बिफोर प्रेजेंट वो इवेंट्स हुआ, और 5.5 बिलियन बिफोर प्रेजेंट द स्टार इज क्रिएटेड. तो क्या 5.5 बिलियन बिफोर प्रेजेंट से सोलर एनर्जी अर्थ के ऊपर ह्यूमन यूज कर रहा है? द आंसर इज नो. वेरी सिंपल. तो क्या एनर्जी की जरूरत मैन जब इवॉल्व किया होगा तो नहीं होगा? ऑफ कोर्स, मैन का इवोल्यूशन तो बहुत रिसेंट है. 10,000 सालों की मॉडर्न मैन की हिस्ट्री. अर्थ का फॉर्मेशन तो बिलियंस ईयर्स बिफोर प्रेजेंट हुआ. 4.6 बिलियन बिफोर प्रेजेंट द प्लैनेट अर्थ क्रिएट. इन 10,000 सालों में इंसानों ने क्या कुछ यूटिलाइज किया, ये देखेंगे. तो नेसेसिटी पर बेस्ड नहीं होता, यूटिलिटी पर बेस्ड होता है, मैंने ये बताया. Varies spatially and temporally depending on the cultural and technical level of the society using it. So what I had discussed, that the resource is based on utility, not on necessity, and resource is also based on their spatial and temporal distribution. Resources also depend on culture. Resources also depend on the technological know-how. वो देश जिनके पास ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी है, वो ज्यादा तरह के रिसोर्सेज आज यूज कर पा रहे हैं. वो डेवलप जो वैसे कंट्रीज, जो थर्ड वर्ल्ड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां रिसोर्स पड़े हुए हैं, यूज ही नहीं हो पा रहे. उनके रिसोर्सेज डेवलप्ड नेशंस वहां से एक्सट्रैक्ट करके उन्हीं को बेच रहे हैं. गो टू द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, व्हाट इज हैपनिंग देयर? वो अफ्रीकन नेशंस के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, वहां यूरोपियंस, एशियंस, ये कंट्रीज जाकर वहां के रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उससे वो पैसे अर्न कर रहे हैं. वाई? बिकॉज टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट है, टेक्नोलॉजी है ही नहीं. हमारे इंडिया में देयर आर सो मेनी रिसोर्सेज, बट आज हम यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कुछ टेक्नोलॉजीज हमारे पास नहीं है.
So resources also depend on the culture. Resources also depend on technologies. In Southeast Asia, the people having स्नैक्स के तौर पे इंसेक्ट्स खाते हैं. इंडिया में बहुत लिमिटेड लोग स्नैक्स के तौर पे इंसेक्ट्स खाते हैं, कुछ स्टेट्स के लोग. पूरा साउथ अमेरिका ह्यूज अमाउंट में पोर्क खाता है. यूएस में बहुत बड़ी डिमांड है, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड, यूरोप के कंट्रीज में. इंडिया में भी लोग खाते हैं पोर्क, but there is no huge demand as like the European country, as like the South American countries or the North American countries. Why? Because of cultural differences. Now, what are the characteristics of resources? The characteristics also what? Clarify its significances. So if you have to understand the significance, first you have to understand the characteristics of resources. Now I have discussed lots of various characteristics. क्या है? First, the resource is never physical substance or material. Rather, it is the intrinsic quality of the substance or the material. In the physical environment, it means in the earth and its environment, there are so many things which is available. Now, if you won't understand the intrinsic value or the quality of that, that never become the resource. जब तक तुम उसके इस्तेमाल को नहीं जानते, उसकी वैल्यूज नहीं जानते, वो तुम्हारे सामने पड़ा है, वो रिसोर्स नहीं है. अर्लियर द सैंड वाज नॉट रिसोर्स. टुडे देयर आर लॉट्स ऑफ सैंड माफियाज दोज हु आर वर्किंग, क्योंकि उसकी डिमांड हो गई. बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है, रोड कंस्ट्रक्शन करना है, तो सैंड बिकम द रिसोर्स, द सॉइल बिकम द रिसोर्स. पानी पहले पीने के लिए इस्तेमाल होता था, अब इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है, थर्मल हाइड्रो पावर प्लांट में इस्तेमाल हो रहा है, थर्मल पावर प्लांट की कूलिंग के लिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट की कूलिंग के लिए, और मॉडरेटर के तौर पे उसकी डिमांड बढ़ गई. तो रिसोर्स इज नेवर अ फिजिकल सब्सटेंस और मटेरियल. All the every physical substance or material which is present in the earth and earth environment is never ever a resource until the people won't understand the intrinsic value or quality of that physical matter. Second characteristics. Resource refers to intangible and usable. Resource is technology dependent. पेट्रोलियम था कई सालों से जमीन के नीचे पड़ा हुआ, ओशियन कॉन्टिनेंटल शेल्फ रीजन्स में फॉसिल्स फ्यूल्स पड़े हुए थे, मिनरल्स पड़े हुए थे, टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, निकाला कैसे जाए. जैसे कहा हाइड्रोजन से अब ट्रेन चलेगा, तो हाइड्रोजन क्या अवेलेबल नहीं है? वाटर में अवेलेबल है, एयर में अवेलेबल है, पर क्या आप एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी थी? आप कैसे बनाते? So as I have said, resource is technology dependent. Resource for one set of people can be waste material for the others. जो चीजें आप फेंक देते हैं आपके लिए वेस्टेज हैं, मे भी दूसरे लोगों के लिए वो रिसोर्स. आप स्क्रैप बेचते हैं, दुनिया में स्क्रैप का बहुत बड़ा मार्केट है. लोग उसको रिसाइकिल कर कर, रीयूज कर कर फिर से चीजों को बना रहे हैं और बेच रहे हैं. वो आपके लिए वेस्ट है, दूसरे के लिए वो रिसोर्स है. आप उसे फेंक रहे हैं, दूसरा उसको खरीद रहा है, रिसाइकिल कर रहा है और नई चीजें बना रहे हैं. व्हाई? बिकॉज ही हैज द नॉलेज, टेक्नोलॉजीज. Thus, resource is dependent on culture, level of technology, and the economic aspiration of the people. It also depends on economic aspiration. एक इंसान इकोनॉमिक एंडेवर क्या करता है, ठीक है, अपने लाइवलीहुड के लिए, ठीक,
So the developed countries, those who are economically and technological very sound, they started utilizing so many resources, जो चीजें उनके पास नहीं भी है, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ के कारण दूसरे देशों में जाकर वहां के रिसोर्सेज वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके पीछे इकोनॉमिक वैल्यूज है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देखो, कई सारे देशों में उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिकली दे वर साउंड, और फिर वो अपनी इकोनॉमी को और स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उस पैसे को, टेक्नोलॉजी को अप्लाई कर रहे हैं, दूसरी जगह एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मिनरल वेल्थ और क्रिएट कर रहे हैं, लाखों लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। सो रिसोर्स इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट एज इट इज नॉट स्टैटिक। ये चेंज होता है कॉन्सेप्ट ओवर पीरियड ऑफ टाइम विथ स्पेस, इट्स एवर चेंजिंग। 2026 में जो रिसोर्स आप जानते हैं, हो सकता है 2046 में वो नहीं रहेगा, कुछ नए रिसोर्सेज आ जाएंगे। आज से 30 इयर्स बैक लोग सोच भी नहीं सकता था कि हर इंसान के पास के हाथ में मोबाइल फोन होगा, वो ग्लोबली कनेक्टेड रहेगा, वो रिसोर्स रिच रहेगा, उसके पास डिजिटल इंफॉर्मेशन होगा, रिसोर्सेज होगा, ग्लोबल न्यूज होंगे उसके हाथ में, उसके मोबाइल में रिसर्च पेपर होगा, इंफॉर्मेशन और नॉलेज होंगे, लोग उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। So resource is a dynamic concept since the value utilization and the purpose of the resource change with economic progression of the society. So as the society grow economically, the new technology, the new process we understand, we invested on study, research, development. जितने डेवलप नेशन है देखो उनके जीडीपी का कितना परसेंट रिसर्च डेवलपमेंट में खर्च हो रहा है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में खर्च हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस को देखो और उनकी जीडीपी का कितना परसेंट रिसर्च डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में खर्च हो रहा है। तो जैसे जैसे इकोनॉमिक प्रोग्रेस होता है, एम्फेसिस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर होता है। द पर्पस बिहाइंड इट, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। ओके, सस्टेनेबिलिटी कैसे आएगा? क्योंकि आपको चीजें इस्तेमाल करनी है, लाइवलीहुड जनरेट करना है। सो रिसोर्स इज फंक्शनल कॉन्सेप्ट, इट इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट एंड इट इज ऑल्सो फंक्शनल। ओके, it refers to functionality of naturally occurring substance or material. Okay, it depends on the functionality of the matter. These are the characteristics feature of the resources. Now there are three category of natural endowments. One is neutral stuff. तीन तरह के नेचर में आपको चीजें मिलती हैं। एक है, उसको कहते हैं न्यूट्रल स्टफ, NEUTRAL, न्यूट्रल। सामने पड़ा है तुम्हारे, वर्षों से देख रहे हो, लेकिन वो आपके काम का नहीं है क्योंकि आपको उसके यूटिलाइजेशन के बारे में पता नहीं है। ठीक है, in Assam there is a petroleum mining place in Assam called Digboy. The place name is Digboy in Assam. So during the British period, one Europeans searching the petroleum and minerals resources, studying the geology of the northeastern region. When he studied the geological structure, he sensed that here there may be a chances of presence of petroleum. So what he said,
to the workers or the laborers, those who are there, big boys, बच्चों यहाँ खुदाई करो, यहाँ खुदाई करो। डिग मतलब होता है खोदना, उस जगह का नाम पड़ गया दिग बॉय। क्यों? क्योंकि खुदाई के बाद वहां से क्या निकला? पेट्रोलियम। नाउ देयर इज अ पेट्रोलियम वेल देयर, तेल का कुआं है। तो वहां के लोग तो वहीं रह रहे हैं, उनके लिए वो न्यूट्रल स्टफ था, क्योंकि सारे नेचुरल एंडोमेंट, नेचुरल मटेरियल, मैटर्स जो अवेलेबल है, आप उनके बारे में नहीं जानते कि कैसे यूज करना है, कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, तब तक वो न्यूट्रल है। Every natural endowment is neutral stuff which does not show functionality. तब तक जब तुम उसके फंक्शन को नहीं जानते, वो न्यूट्रल है, वो कहलाता है न्यूट्रल स्टफ। देन रेसिस्टेंट स्टफ, इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द रेसिस्टेंट स्टफ? They are proactive substance, but they are generally dormant and they need modification, transformation or alteration. बोला it's a proactive substance, it may be, you may be use it, but the problem is it is dormant, it needs modification, it needs transformation, it needs certain changes, it needs certain processing, और वो जब तक तुम करोगे नहीं वो यूज नहीं कर सकते। और तीसरा है रिसोर्स। नेचर में न्यूट्रल स्टफ है, सामने पड़ा है, हम यूज ही नहीं जानते। रेसिस्टेंट स्टफ है, हम यूज है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग करनी होगी, मॉडिफिकेशन करना होगा, तब वो काम के लायक बनेगा, वो करना पड़ेगा। उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी उसके लिए। फिर है रिसोर्स, ऑल नेचुरली अकरिंग मटेरियल एंड सब्सटेंस विच आर डायनामिक एंड फंक्शनल and are aiming at the larger goal of human welfare are based on level of technological and cultural societies. So every natural material or substance which depends on the culture and technological development and know-how, okay, and the man started utilizing it, that become resources. तो उसको रिसोर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है, सैंड इज न्यूट्रल स्टफ, बालू पड़ा है वर्षों से, लोग नहीं जानता था तो न्यूट्रल था। सैंड एंड वाटर इज रेसिस्टेंट स्टफ, सैंड वाटर नाइट्रोजन प्लस ह्यूमस ऑल बिकम रिसोर्स। अब सैंड और वाटर को देखो, सीमेंट के साथ मिक्स कर दो, कंक्रीट बना दो, घर बन रहा है। लेकिन सैंड और वाटर के साथ सीमेंट मिक्स करोगे, प्रोसेसिंग करोगे, चेंजेस करोगे, वो एक क्या बनेगा? उसके साथ कंक्रीट यूज करो, फिर देखो कैसे स्ट्रेंथन करता है। सो सच नेचुरल एंडोमेंट कैन बी यूज्ड बट कंडीशनली। सो सैंड ऑफ मालाबार कोस्ट इज अ न्यूट्रल स्टफ। मालाबार केरला में जाओ, मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को न्यूक्लियर एनर्जी, तो बताया था मालाबार कोस्ट में मोनाजाइट सैंड है। मोनाजाइट सैंड पड़ा हुआ है, उसमें थोरियम है, बट थोरियम को एक्सट्रैक्ट कर कर, और हमारे पास आज वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम थोरियम से न्यूक्लियर एनर्जी एक्सट्रैक्ट करें। हम यूरेनियम से बनाते हैं, प्लूटोनियम से बनाते हैं, अभी थोरियम वाला रिएक्टर हम डेवलप नहीं कर पाए। वो रिसोर्स है, सैंड है, वो न्यूट्रल स्टफ है, थोरियम रेसिस्टेंट स्टफ है। अब उस सैंड में हमें ये पता लग गया है कि थोरियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, हम इससे बना सकते हैं, बट उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, उसमें ऑल्टरेशन करना पड़ेगा। वो टेक्नोलॉजी नहीं है, और जब तक वो टेक्नोलॉजी नहीं है तब तक ये थोरियम हमारे लिए रेसिस्टेंट स्टफ है, वो रिसोर्स नहीं है। So here with this example, I had given you what is the concept of neutral stuff, what is the concept of
the resistant stuff, and what is the difference of resource. So these three terms in geography having three different meanings. Resource and wealth, इनमें क्या है, संपदा है एक और एक संसाधन, इन दोनों शब्दों में अंतर है. As I have written here, the wealth is a static concept. It never changed with time. Wealth never changed with time. Wealth never, national wealth, that is the land which is fixed, the capital, land as a capital. The territory is fixed. Of course, if you change the boundary and territory, it may change, but वो किसी का होगा, तुम्हारे अंदर में आ गया. तो ग्लोबल लेवल पे लैंड क्या चेंज हो गया, क्या वाटर चेंज हो जाएगा? नहीं. 71% of the earth occupied by water, 29% by the land, that is fixed. But resource is a functional and dynamic concept. Resource change as the technology change, resource change as a cultural transformation takes place. 20 years back, if you go and ask the people, do you have ever the pizza and burgers? The people said no. Because in the Indian culture, that was not a food. But today, the young generation cherish and enjoy having the chowmings and continental dishes, okay, Western dishes in India also. Why? Because of globalization, that things also reach there. Because of digitalizations, बाहर की चीजें YouTube पे अवेलेबल हैं, लोग देख के घर में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बना रहे हैं. That led to cultural transformation. और जब cultural transformation हो रहा है, what we are wearing today, shirt and jeans, blazer and coat and pant, that is European attires, the attires of the West. इंडिया में धोती कुर्ता, कुर्ता पजामा, इस तरह की साड़ी वियर करते थे, वो चीजें बदल रही हैं. कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. अब इसकी डिमांड बढ़ गई है मार्केट में, तो मार्केट में जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं. तो नए नए ब्रांड्स डेवलप हो रहे हैं इसी में. समवेयर इफ यू लुक एट द पीपल आर वियरिंग, ओके, द सूट एंड द टाइज ऑफ lakhs and crores of rupees. 40-50 लाख के सूट्स पहन रहे हैं लोग, है ना. शूज पहन रहे हैं 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख के. टाई वियर कर रहे हैं लोग लाखों रुपए के. वॉचेस वियर कर रहे हैं लोग लाखों करोड़ों रुपए के, लिमिटेड एडिशंस वॉचेस. सो इट डिपेंड ऑन, और उसी कैटेगरीज के, उसी इकोनॉमिक कैटेगरीज के लोगों के लिए अलग अलग ब्रांड, अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं. डिमांड को देखते हुए. So resource is a functional concept. It is, wealth is a static concept. Resource is a functional concept, dynamic one. Resource dynamic है, functional है. Resource is mind dependent. Mind dependent. As I have said, the people thought processes change over period of time as the learning environment change, as the technological know-how changes, as the cultural transformation takes place. तो रिसोर्स बदलता है, यूटिलिटी बदलती है, डिमांड बदलती है, नीड बदलती है, रिसोर्स भी बदलते हैं. गांव से लोग शहरों की तरफ आए तो मैटेरियलिज्म ज्यादा बढ़ गया, भौतिकता ज्यादा बढ़ गई, दिखावा ज्यादा बढ़ गया, शो ऑफ ज्यादा हो गया, लोग ज्यादा खर्च भी करते हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, वो कर सकते हैं. गांव में वो रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है तो क्या शो ऑफ करेगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, वो चीजें अवेलेबल ही नहीं. तो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन से
2-3 ईयर बैक इंडिया के मेजॉरिटी ऑफ फैमिली के लोग का रूरल बैकग्राउंड है, और उन्हीं के नाती पोते और ये ऐसे शहरों में रह रहे हैं, पता ही नहीं लगेगा कि अच्छा उनका रूट्स कभी गांव से भी जुड़ा था। क्यों? क्योंकि वो जब आए तो उन्होंने कल्चरल एडेप्टेशन कर लिया, अर्बन सेटलमेंट के अकॉर्डिंग वो ट्रांसफॉर्म हो गए, उनके नॉलेज, उनके कल्चर, उनके कस्टम, उनके ट्रेडिशंस वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होते चले गए, माइंडसेट चेंज होता चला गया, डिग्री ऑफ यूटिलाइजेशन बदल गए। तो मैंने क्या कहा, रिसोर्स इज अ माइंड डिपेंडेंट, रिसोर्स एज अ फाइनल गोल ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। वेल्थ जरूरी नहीं है, आप वेल्थ क्रिएट करेंगे तो ह्यूमन वेलफेयर करेंगे, जरूरी नहीं है। वेल्थ का तो हो सकता है गलत इस्तेमाल भी होगा। रिसोर्स नेशन जो बिल्ड करता है रिसोर्सेज, नेशन ऑलवेज बिल्ड फॉर द ह्यूमन वेलफेयर। So it's a human welfare and emancipation of society, economic progress of the country. Thus, resource is always welfare oriented. Resource is humanistic in concept. यहाँ ह्यूमनिटेरियन अप्रोच है, ह्यूमनिस्टिक कॉन्सेप्ट है। ये मैंने बताया क्या, रिसोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? Yes, sir. कैमरा ऑन करो। ऑन योर कैमरास। Yes, sir. तो बिना देखे बताओ, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स यू हैव लर्न। समझ आ गया? बताओ, मेरी तरफ देख के बताओ, हाउ मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स आई हैव डिस्कस। चलो कैमरा बंद कर दो अब बैठ के। सो इन एनिमेट एंड एनिमेट बोलने से पहले सोचा करो कि क्या बोल रहे हैं। रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स, one is animate, another is animate. Inanimate and animate resources, based on what? Based on the whether the resource is alive or not alive. Inanimate object is, it means what? Non-living, which is not alive, it is not conscious, there is a lack of consciousness, which is not alive, is called inanimate. That is non-biotic. So inanimate, you may say it is what? Abiotic. Abiotic, non-living. What is animate? This is biotic. This is living. So resources based on what? Consciousness are of two types. One is inanimate. Inanimate means which is not alive, lack of consciousness, is called inanimate resources. The resources which is alive is called animate resources. Forest resources. In the forest, what are there? The trees, the wildlife resources, the marine resources.
All these are animate resources, living one. Trees are living, animals are living, so they are animate resources. What are inanimate? Air, water, wind, solar, all these are inanimate resources. Am I clear? What is the difference between this? Now, when we look at the resources, can be categorized based on their renewability, reutilization, reprocessing, are of two types. One is non-renewable, another is renewable. The renewable, which is also called as non-exhaustible. The renewable is also called non-exhaustible. So non-exhaustible and exhaustible. When you started using it, इस रिसोर्स को यूज करोगे, then what? It ended over period of time, खत्म हो जाएगा, exhaust हो जाएगा. But the non, these resources can be reutilized after processing. ओके okay. तो ये एग्जॉस्ट नहीं होता, ये खत्म हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, इंड हो जाता है. एग्जाम्पल है सोलर, एग्जाम्पल है कोल. इफ यू स्टार्टेड यूजिंग कोल, बर्न होने के बाद एशेस में कन्वर्ट हो जाएगा. सोलर, यू कैन रीयूटिलाइज सोलर. द टाइडल ओटेक, यू कैन रीयूटिलाइज. ओके, so there are so many resources which is renewable in nature. फिर से आप reuse कर सकते हो after processing. Resources can be classified on the basis of their existence. If it is present in the nature, that is in earth and earth's environment, then it is called natural. But the resources may be created by the man with their scientific endeavor, with research and development. Now the digital technologies is a anthropogenic resources. Now we are utilizing, interconnecting, linked with each other, interacting with each other. By utilizing that resource is a man-made resource. The dam which is created by the man create a barrier in the path of the river where we block the water, channelize the water in different direction and started creating hydroelectric power. The hydroelectric power is a man-made resource. Okay. So anthropogenic and natural. So there are various type of resources as I have said. तो resources यहाँ मैंने आपको बताया कि there are various basis of classification. Resources may be classified on the basis of its utilization as a source of energy. So the resources which is used as a source of energy is called energy resources, which gives what? What is energy? Capacity to do the work. But some resources are not utilized as energy resource, are the non-energy resource, the metallic,
and various non-metallic elements and minerals are non-energy resources, but some resources are energy resources. Coal, the thermal energy, for the purpose of thermal energy, we use hydro, photic, tidal, nuclear. Even the wood is used, the biomass energy, the cow dung केक बनाते हो, गोबर गैस बनाते हो, बायोफ्यूल्स डेवलप कर रहे हैं हम लोग with the help of, okay, sugar cane molasses, ethanol बना रहे हो, जैट्रोफा प्लांट से आप बायोडीजल प्रिपेयर कर रहे हो. तो ये जो आप, there are various energy resources. So here what I had discussed, there are various bases to classify the resources. बहुत सारे बेसिस है यहाँ. अभी देखिए रिसोर्सेज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, मेटालिक में भी फेरस और नॉन फेरस. So the element having magnetic properties, ferrous, non-magnetic property, non-ferrous. Okay, तो इस तरह से हमने यहाँ बताया कि there are various way you can classify what the resources. तो आप कई तरीके से रिसोर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं. सो व्हाट इज इट, ये क्या है? ये था अभी जो मैंने डिस्कस किया, ये था